स्नेही भैया बहन, आपकी सकुशलता हेतु सफल मंगल कामना है। Division of integer. What is division? Division is a inverse operation of multiplication. That means inverse process of multiplication. As we know that 5 add to we get result is 7 and subtract to we get result is 5. यानी 5 में जो ऐड किए वहीं अगर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो 5 चला आता है. दैट इज मीन्स एडिशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन. Also 5 multiply 2 we get result is 10. Also 5 divide 2 we get result is 5. That is division is inverse process of multiplication. Another word, the repeated subtraction is called division. The repeated subtraction is called division. Division is divide two equal part. That means in number line 1, 0, 1, 2, 3 and 4. 4 divide 2. That means 4 divide 2 equal part. First part and 2nd part. Clear? If divide two integers, the sign is equal, that means same, we get result is positive. For example, take a integer 8, another integer b is equal to 4. That is a divide b is equal to 8 by 4 is equal to 2. The sign of this integer is positive. The quotient is also a positive. And a is equal to minus 10, b is equal to minus 5. The same sign, we get result also is positive. 10 by minus 5, we write the cancellation minus into minus, y minus into minus, minus 10 we write 10 by 5 and minus 1 upon minus 1. That means minus 5 we write 5 into minus 1. The minus 1 and minus 1 are cancelled and 5 divide 2 we get result is 5 divide 10 we get result is 2. That means 2 also is positive. In division process of two integers are equal sign, we get result is positive. And two integers are unequal sign. For example, two integers are unequal sign. A is equal to minus 8, b is equal to minus 8, b is equal to 4. The sign are opposite, that means unequal, we get result is negative.
a by b या a डिवाइड b इज इक्वल टू -8/4 इज इक्वल टू -2. Also a is equal to 10, b is equal to -2, then a divide b is equal to 10 by -2 divide, we get result is -5. This conclusion, as we result, in division process two integer are equal sign, the quotient is positive, and two integers are unequal sign, the quotient is negative. Next, understand some properties of integers. Properties of division of integers. First, if a and b are integers, then a divide b not necessarily an integer. For example, that means a and b are integer, a और b integer है, इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा नॉट नेसेसरी इंटीजर, वो इंटीजर हो भी सकता है, इंटीजर नहीं भी हो सकता है. दिस इज ए कॉन्सेप्ट, the base of the development of rational number. For example, a is equal to 10 and b is equal to -2. Therefore, a divide b is equal to 10 upon -2. We get result is -5. Is an integer, but a is equal to 5 and b is equal to 3. Therefore, a divide b, that means a by b, is not necessarily, that means 5/3. 5/3 is not an integer. क्लियर? यानी a और b को इंटीजर है, उसको डिवाइड करेंगे तो इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सेकंड प्रॉपर्टी, इफ a is an integer, then a divide 1 is equal to a. फॉर एग्जाम्पल, यानी कोई इंटीजर है, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वो वही. प्रॉपर्टीज 3, इफ a is a non-zero, what is non-zero? That means a not equal to 0. Non-zero integer, then a divide a is equal to 1. a कोई नॉन जीरो नंबर है तो उसको उसी से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा. फॉर एग्जाम्पल, a is equal to 7, therefore a by a is equal to 7/7 is equal to 1. कैंसिल हो. क्लियर? if
A is non-zero integer, then A 0 divide A is equal to 0, but A divide 0 is not meaningful. That means is not defined. That is undefined. For example, first, that means 0 by 5 is equal to 0 and 0 by minus 3 also is equal to 0, but 5 by 0 minus 3 by 0 is equal to undefined. क्लियर? वाई अनडिफाइंड? तो आप जानते हैं कि 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2, 15 अपॉन 3 is equal to 5. Multiply these, we get result. Multiply these, we get result. But 5 by 0 is equal to, some take 0 multiply 0 is equal to 5. That means undefined. It is not possible. 0 into 0 is equal to 5. Clear? For this conclusion of this property, anything upon 0 is equal to undefined and 0 by anything, that means denominator not equal to 0 is equal to 0. Clear? Property 5. If A, B and C are integers, then under bracket A divide B divide C does not equal to A divide B under bracket C. बट एक इसमें ध्यान रहे, अनलेस C इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 10, B is equal to 2 and C is equal to 5. Therefore LHS is equal to A divide B under bracket divide C is equal to 10 divide 2 divide 5 is equal to, फर्स्ट टाइम ब्रैकेट का वर्क होगा, 10 by 2
डिवाइड 5 कैंसिल करेंगे तो 5, 5 डिवाइड 5 दैट मीन्स 5/5 इज इक्वल टू 1। RHS A डिवाइड अंडर ब्रैकेट B डिवाइड C इज इक्वल टू 10 डिवाइड 2 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 10 डिवाइड, इसका वर्क होगा तो 2/5, फिर 10 डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो ये डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, तो 5/2 कैंसिल करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 25। LHS 1 है, 25 RHS है। देयरफॉर या 10 1 डज नॉट इक्वल टू 25, या LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। वेरीफाइड। क्लियर? अब देखिए इसको रखते हैं तो क्या होगा। C इज इक्वल टू 1 रखते हैं, A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 1। इसको रखते हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिलता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। दैट मीन्स 10 डिवाइड 2 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 10/2 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 5, कैंसिल करेंगे तो 5 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 5। ये हुआ LHS। क्लियर? फिर RHS, तो A डिवाइड B अंडर ब्रैकेट C इज इक्वल टू 10 डिवाइड 2 डिवाइड 1, ब्रैकेट डिस्क्लोज होगा तो 10 डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो 2/1, ये हो जाएगा 10 डिवाइड 2/1 इज इक्वल टू 2, तो 10/2 कैंसिल करेंगे तो 5। इस कंडीशन में LHS और RHS इक्वल हो गया। ध्यान रहे, इफ A, B and C are integers, then A divide B under bracket divide C does not equal to A divide under bracket B divide C. It is only true if C not equal to 1। ये तभी सही होगा जब C not equal to 1 होगा। क्लियर? यहां C का वैल्यू 0 भी रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए इसका ध्यान रहे। अंडरस्टैंड?